I have to derive derivation of gravitational potential. This is a big mass m whose influence is there up to r distance, whose influence is there. And a unit mass is taken from infinity to a distance r through point P. I am just taking a unit mass m0 from infinity to a distance r, infinity to a distance r through point P. When this m0 is at P point, gravitational attraction is there along this line. And what is that gravitational force? I can calculate the gravitational force here easily because this is a calculated point. This is what F. F is the gravitational force. लिखो, diagram draw करो पहले. Draw the diagram. Draw the diagram. अरे diagram draw करो पहले. Draw the diagram. Draw it. Draw the diagram. Draw the diagram. अगर हो गया तो बोलो. Yes, sir, done. हो गया. लिखो. Let a unit mass m0. Let a unit mass m0 is taken from infinity to a distance capital R, infinity to a distance capital R through point P. Let a unit mass m0 is taken from infinity to a distance r, through point P, which is at a distance x from mass capital M, which is at a distance x from mass capital M. Understand this? Now write down the gravitational force between capital M and m0. The gravitational force between capital M and m0 at a distance x is given by x is given by F is equal, what will get? G m m0 divided by x square. अरे यहीं पे मुझे फोर्स निकालना है. कहाँ पे निकालना है? एग्जैक्टली यहीं पे फोर्स निकालना है. सर फिर से एक बार रिपीट कीजिए ना. ओके. द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन m and m0 at a distance x is given by F is equal G m m0 into x square. Is that clear? अरे समझ में आया? सभी को समझ में आ रहा है? नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है यहीं पे पूछना है. कुछ क्वेश्चन? अरे कुछ क्वेश्चन पूछना है. हेलो नहीं है. Now let dx be the small displacement due to this force. Let dx, यहाँ पे dx छोटा सा displacement हो गया. Let dx be the small displacement due to this force. ये dx है. यहीं पे dx है. dx is the small displacement due to this force. dx है. Very small displacement dx. लिखो. Sir, you said M. Capital M won't pull. Sir, you said capital M won't pull unit mass till it reaches the dotted line. Yes. Sphere. The influence. Yes. The influence of capital M. The influence of capital M is up to this. Up to this is the influence of capital M. When how will you move it? Yes. dx? Hello. So the dx will external force or gravitational force? No, dx is the displacement. F is the gravitational force. F is the gravitational force.
आई एम जस्ट गिविंग एक्सटर्नल फोर्स, ऐसे लेके यहीं तक लाके छोड़ दिया। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, जो कैलकुलेटेड डिस्टेंस है x, एंड नाउ लेट F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। आई एम जस्ट फाइंडिंग आउट ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। Understand this? Let dx is the small displacement due to this gravitational force, not external force, due to gravitational force. Understand this? Hello? Yes, sir. But sir, you said it won't pull the body until it So reaches the it dotted will never sphere. pull the body. Think that if it is pull, it is just pulling minutely, very small distance. That's why I've written here, very small distance. If it is just minutely, matlab 0.00001 second, 1 meter, 1 centimeter say, clear? If it is just pulling very minutely, because the influence starts from here, it is just pulling very minutely. Let dx be the small displacement due to force F. Understand this? अरे समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिखो dx, लिखो इसमें, write down, this is what dx, write down, डायग्राम में दिखा है dx, इंपॉर्टेंट है। अरे डायग्राम में दिखा है dx, ओके लिखो। ये डेरिवेशन जैसे मैं कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एग्जैक्टली वैसे ही डेरिवेशन होगा। अंडरस्टैंड दिस? लिखो, लेट dx be the small displacement due to this force. Let dx be the small displacement due to this force. Then work done is given by, let dx be the small displacement due to this force. Then work done is given by, how much is the work done? How much is the work done? dw is equal f dot dx. What is the angle between f and dx? F and dx angle is what? F is along this one, dx also along this one. Angle is what? 0 degree. So I can write here f dx cos 0. Now total work done, इसको integrate करेंगे. Total work done is given by total work. So I have to integrate dw, and here I have to integrate f dot dx. Now see the limits. Limits is very very important. How to supply the limits? Let's see this. How to supply the limits? Let's see this. देखो ये पे dx का फंक्शन है, ये w का। dx जब इंफिनिटी में होगा when distance is at infinity, work done is 0. when distance is at a distance r, capital R, infinity से capital R तक जा रहा है, तो when the distance is capital R, my work done is w. किसी का डाउट है यहीं पे? अरे यहीं पे किसका डाउट है? यहीं पे किसी का डाउट है? देखो, I have to do work from Sir, please infinity to a repeat. distance. Yes. Any question? सर एक और बार रिपीट Yes. कीजिए। देखो, मुझे कहाँ से कहाँ तक वर्क डन निकालना है, बोलो। I have to find out the work done from infinity to a distance r. So I have to find out small work done first. Small work done by this gravitational force. Small work done by gravitational force क्या है? F dot dx. F and dx के बीच में एंगल 0 डिग्री आ रहा है, f dx cos 0. Now total work done, I have to integrate this. Whenever you are integrating dw 0 to w, f dot dx infinity to r, because I am taking the unit mass from infinity to a distance r. r तक छोड़ना है. Why? Because r में मेरा इन्फ्लुएंस शुरू हो रहा है, ये कैपिटल M का इन्फ्लुएंस r में शुरू हो रहा है, इसलिए मुझे इन्फिनिटी से r तक ही लेना है, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिक हो जाना है। तो यहीं पे क्या किया? I have taken a calculated distance at p. At p I have to find out gravitational force. Now let dx be the small displacement due to this gravitational force, because this gravitational force is a weak force. Therefore I have to take dx as the small displacement. Then work done is dw is equal f dot dx. Now the angle between f Sir, and this dx is work is 0 done degree. by gravitational Yes, force only, sir. yes. Sir, this work done is Huh? done by gravitational force only. Yes, gravitational force, work done due to gravitational force. I found that work done due to gravitational force, not due to external force. Understand this? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Now total work done by gravitational force is what? कहाँ से कहाँ तक? Infinity to r. When the body is at infinity, work done is 0. When the body is at a distance r, work done is w. Is that clear? Is that clear? Yes. यस ये सर। डेरिवेशन एग्जाम में sir, yes. गिरेगा। Is that clear? Yes, क्या sir. किसका डाउट है बोलो? हेलो, कुछ क्वेश्चन पूछना है? नहीं है? बस
अभी इसको लिखो, इंटीग्रेट करो इसको. नाउ f dx cos 0, राइट डाउन, इंटीग्रेट करते चलो एंड सी. नाउ दिस इज व्हाट dw integration 0 to w, that is what f dx cos 0. already I have written this, infinity to r. लिखो यहीं तक लिख दिए. अरे पूरा समझ के लिखो, अच्छी तरह समझो, लिखो अच्छी तरह समझो एंड गो ऑन राइटिंग दिस. हो गया? लिख दिया? Yes, sir. Okay. लिख दिया ना? Yes, sir. लिख दिया तो यस बोलो. ऑन इंटीग्रेटिंग दिस, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग dw 0 to w, f का वैल्यू डालो. f इज व्हाट gm m नॉट बाय x स्क्वायर इंटू dx, इट्स इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r. बहुत बार गिरेगा ये इंटीग्रेशन, इसलिए अच्छी तरह ध्यान से देखो. इंटीग्रेशन ऑफ dw 0 to w एंड कांस्टेंट है gm m नॉट, कांस्टेंट है. that is what integration of 1 by x square dx, this is infinity to r. is it clear? now what is 1 by x square integration? बोलो. अरे क्या है सिमरन, बोलो. x पर माइनस टू डी एक्स इंफिनिटी टू आर, क्या इंटीग्रेशन? अरे क्या है? अरे कॉपी सभी का मिल गया ना? हेलो, या फिर No, किसी sir. मेरे पास Sir, है? मेरा नहीं मिला. किसको किसको नहीं मिला? Sir, चिरंजीत. चिरंजीत. Yes, sir. अरे तुम्हारा कॉपी नहीं मिला या संजीव का? Sir, सर मेरा मुझे भी नहीं मिला. चिरंजीत एंड संजीव दोनों को नहीं मिला? अरे छोड़ दिया था, किसका दूसरा नंबर पे चला गया क्या? ओके ओके, चिरंजीत एंड संजीव, बाकी सभी का मिल गया. अरे नेक्स्ट टाइम जब टेस्ट दोगे, अपना नाम कॉपी के ऊपर लिख के उसको पीडीएफ. अरे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? एक्स पावर माइनस टू डी एक्स. यस, जल्दी बोलो. अरे इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? जी एम एम जीरो एक्स पावर माइनस टू डी एक्स, कितना आएगा? अरे क्या है? Sir, x by minus 1. x power minus 2 plus 1 by minus 2 plus 1, and this is what infinity to r. Understand this? And we are going to get this dw ka integration w hai, this is 0 to w. If you just write down this gm m naught, this is x power minus 1 by minus 1 infinity to r, and ये upper limit minus lower limit करेंगे. Just before, write down nicely arrange that gm m naught into minus 1 by x, this is infinity to r. लिखो, write down first. Second derivation वैसे ही मैं करूंगा. The formula x power n dx is what? x power n plus 1 by n plus 1. Is that clear? Yes, sir. Yes, Avi? Yes, sir. Okay, now just solve this and get the answer. If you'll solve this, what will get? Upper limit minus lower limit, w minus 0. This is what? g m m 0 minus 1 by x. x है, x की जगह क्या लिखेंगे? r. x की जगह r लिखेंगे, कैपिटल R, minus 1 by infinity. What is 1 by infinity? 1 by infinity is what? 0. सर हाँ बोलो बोलो बोलो. सर थोड़ा प्रीवियस पेज Previous, दिखाइए okay, थोड़ा सा. okay. यस सर हो गया. हो गया. Next, तो upper limit minus lower limit, you have to write 1 by infinity is 0. देखो g m m 0 into minus 1 by r. Why? Because this is 0. 1 by infinity is your 0. Now work done w is equal minus g m m 0 divided by r, or w by m0 is equal minus gm by r. What is w by m0? Anybody? Can you tell me what is w by m0? अरे प्रतीक बोलो, w by m0 क्या है? प्रतीक, Yes, sir. अरे w by m0 क्या है? हेलो,
याद कर रहा हूँ सर। सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, अरे क्या भूल गया, V इज इक्वल, दो फॉर्मूला है, W बाई एम जीरो और माइनस जी एम बाई आर. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग निकालेंगे क्या, के क्यू बाई आर. पढ़े पढ़े होंगे, सब डेरिवेशन वैसे ही होगा, इसलिए पूरा 12 क्लास को एक साथ पढ़ रहे हैं हम लोग. वाह. तो B इज इक्वल W बाई एम जीरो और माइनस जी एम बाई आर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव. Gravitational potential is always what? Negative. Write down. Gravitational potential is always negative. So here also you can do the problem. Write the question there. Question is like this. What? Two masses. One is 4 kg and this is 6 kg. They are separated by 10 meter apart. Find out gravitational potential at point P if this is 2 meter. Find out the gravitational potential at point P. निकालो. Gravitational potential at point P is how much? Find out this. 1 मिनट में निकालो कितना है. देखो, potential at P due to 4 kg कितना आएगा? Gravitational potential at P due to 4 kg minus G, mass is 4 kg by distance is 2. जूल पर केजी आ रहा है, 2 2 4, that is minus 2g joule per kg. Understand this. Next, potential at P due to 6 kg क्या है, माइनस जी इंटू 6 बाय, ये डिस्टेंस कितना होगा, 2 मतलब 8 है, अरे ये डिस्टेंस 8 मीटर होगा कि नहीं, दिस डिस्टेंस विल बी व्हाट, 8 मीटर. अंडरस्टैंड दिस. तो दिस इज व्हाट, डिवाइडेड बाय 8. अंडरस्टैंड दिस. तो कितना आएगा, दिस इज व्हाट, माइनस 3g बाय 4 जूल पर केजी. नाउ नेट पोटेंशियल, ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है. समथिंग एडिंग इज, एडिशन इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. तो व्हाट इज दैट, द नेट पोटेंशियल, नेट ग्रेविटेशनल potential will be how much, V is equal potential due to 4 kg plus potential due to 6 kg and minus 2g minus 3g by 4. How much will get, minus 11g by 4 and minus 11 by 4 into g, 6.6 into 10 to the power minus 11, that joule per kg. Calculate this and get the answer. यहाँ गलत किया प्रतीक, हेलो. Find out, next question, find out net gravitational potential, find out net gravitational potential in the following figure at point O. Find out net gravitational potential in the following figure at point O. Point O में net gravitational potential you have to find out. This is what, point O. This is a square of length 2 meter. Understand this. And masses are given here. Here you are getting 6 kg, here 2 kg, here 4 kg, and finally here what, say 10 kg. Find out net gravitational potential at point O. Find out 6 kg का, 6 kg का कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट ओवर मीन्स हाउ मच, अरे 2 स्क्वायर रूट ओवर इज 2 रूट 2 पूरा, 2 रूट 2 मतलब ये एक डिस्टेंस कितना क्या आएगा बोलो, अरे हाउ मच इज दिस डिस्टेंस, रूट 2 मीटर. ये कितना आएगा, रूट 2 मीटर. ये कितना आएगा, रूट 2 मीटर. एंड ये कितना आएगा, रूट 2 मीटर, क्योंकि 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का रूट ओवर, तो पूरा आ रहा है 2 रूट 2 मीटर, तो इसका आधा आएगा क्योंकि स्क्वायर है. अंडरस्टैंड दिस. नाउ पोटेंशियल ड्यू टू 6 केजी कितना आएगा, अरे पोटेंशियल ड्यू टू 6 केजी माइनस जी, मास इज 6 by r, r is root 2, that means that much joule per what kg आ रहा है.
नाउ पोटेंशियल ड्यू टू 2 kg कितना आएगा -g इंटू 2/√2 जूल पर kg. पोटेंशियल ड्यू टू 4 kg कितना है -g इंटू 4/√2 what is that joule per kg. Potential due to 10 kg how much will get -g इंटू 10/√2 जूल पर kg. अरे समझ में आया? तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जैसे मेरा गलत था -11√2 होगा. yes according to principle of what superposition net potential is you have to add this all this potential due to 6 kg plus 2 kg plus 4 kg plus 10 kg ऐड करके देखो क्या आ रहा है. अरे सबको ऐड करोगे तो कॉमन जा रहा है -g/√2 कॉमन जा रहा है सभी का g/√2. तो कितना है 6 plus 2 plus 4 plus 10 how much will get -g/√2 कितना है 22 इंटू 22 हो गया. तो रेशनलाइजिंग डिनोमिनेटर करोगे तो कितना आ रहा है इफ रेशनलाइज दिस डिनोमिनेटर व्हाट -11√2 g इतना जूल पर केजी आएगा -11√2 g जूल पर केजी. जी का वैल्यू डाल के मल्टीप्लाई करो रूट टू का वैल्यू भी डालो 1.4 तो ये आ रहा है 11 -11 इंटू 1.4 इंटू जी. जी इज योर 6.6 इंटू 10⁻⁻11. समझ में आ रहा है? हेलो अरे समझ में आ रहा है? Yes, माइनस sir. यस ज्योतिर्मय सही है. बाकी सभी का गलत हो गया. वेरी गुड. अरे आंसर दो सब सो मत जाओ नींद आ रहा है? अरे क्या है हो गया समझ में आया. नेक्स्ट लिखो बहुत इंपॉर्टेंट फिर डेरिवेशन आएगा. अंडरस्टैंड दिस फिर डेरिवेशन लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल राइट डाउन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू. हमारा जो mgh मिला था इससे भी mgh तुमको मिल जाएगा. Gravitational potential energy. What do you mean by gravitational potential energy? What was gravitational potential? It is defined as the amount of work done in taking a unit mass from infinity to that point. But what is gravitational potential energy? This is the amount of work done in taking the masses. This is the amount of work done in taking the masses from one point to another inside the gravitational field of other. देखो क्या है ये m है इसका ग्रेविटेशनल फील्ड r तक है. इसका ग्रेविटेशनल फील्ड r तक है. मैं एक बॉडी को क्या करूंगा एक बॉडी को सपोज m मास है मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर सर और एक बार रिपीट कर सकते हैं थोड़ा दूसरे पॉइंट को लेके डिस्कनेक्टेड जा रहा हूँ ये R2 है. Now whatever may be the amount of work done, that work done is known as gravitational potential energy. Clear हुआ definition? अरे Sir. definition clear हुआ? Hello? हो गया. Definition सर clear हुआ? और एक बार It is रिपीट the कर amount सकते हैं of work sir. done डिस्कनेक्टेड. in taking a mass from one point to another inside the gravitational field of other. Inside the gravitational field of others, I am taking from one point to another a mass small m को. That is known as gravitational potential energy. लिखो definition. पहले definition लिखो. Write down. Gravitational potential energy of a body is defined as gravitational potential energy of a body is defined as the energy associated with it due to its position the energy associated with it due to its position in the gravitational field of another body due to its position in the gravitational field of another body gravitational field of another body. समझ में आ रहा है?
अरे समझ में आ रहा है? एनी डाउट? अंडरस्टैंड दिस? मैं इन्फिनिटी से यहीं तक लाके छोड़ा था, अभी क्या करूंगा, एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट लेके जाऊंगा, R1 to R2, whatever may be the work done, that is known as gravitational potential energy. सभी को समझ में है? सभी को समझ में है डेफिनेशन या डाउट है? अरे डेफिनेशन समझ में है सभी को? हेलो? यस सर। ओके, अभी देखो, अभी वही कॉन्सेप्ट को लेके जाएंगे, वही कॉन्सेप्ट देखो, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट. दिस इज व्हाट a body of mass m is there, and its influence exists up to what? Infinity. Its influence exists up to r distance. Now I am taking a body what of mass m not लिया था, यहीं पे m लेंगे infinity से लेके जाएंगे. M naught is taken from m mass is taken from infinity to, देखो, m is taken from infinity to a distance r, infinity to a distance r through point p. P is my calculated point. P is what? P is at a distance x from mass m. Diagram draw करो. X from mass m, and this is my r, influence, gravitational influence है. Understand this? Same, let F is the gravitational force acting on it, and let dx be the small displacement. Dx is a small displacement. Draw करो, diagram draw करो. Dx is the small displacement here. Draw the diagram. सेम टू सेम, बट वहां पे हम लोग इंटीग्रेशन किए थे इन्फिनिटी टू आर, यहीं पे इंटीग्रेशन करेंगे R1 to R2. R1 to R2 मतलब इनसाइड दिस वन वी हैव टू इंटीग्रेट R1 to R2. ड्रॉ करो डायग्राम.